Um, Hi students, my name is Avantika Gupta. I am a subject expert at GPC Banswara. Um, so in the previous lectures, we studied gauges, rails, types, and then the wearing of rails, and then the failure of rails. Now in this video, we will study about the creep of rails. This video lecture will deal with creep. कि creep क्या होता है, indication of creep कि हमें how can we come to know that the creep has occurred in the rail, causes, effects and prevention, because it is an undesirable thing. So we'll have to see how we can prevent creep. So creep is defined as the longitudinal movement of rails with respect to sleepers in a track. So creep क्या होता है कि with respect to sleepers जो rails होती हैं they move longitudinally. There are a number of causes behind it, a number of reasons behind it that we will see. So as of now creep क्या होता है, the longitudinal movement of rails with respect to sleepers. जो rails हैं वो longitudinally move कर गई हैं forward या backward, तो that is called creep. Creep is common to all railway tracks but varies in magnitude. So creep is very common. It is bound to happen. We'll see the reason. It's observed that rails move in a direction of dominant traffic. That too why we'll see. Indication of creep. तो कैसे पता चलेगा कि क्रीप हो गया है, दैट इज जो रेल्स हैं वो लॉन्गिट्यूडनली फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड अपनी जो पोजीशन है वहाँ से मूव कर गई हैं विथ रिस्पेक्ट टू स्लीपर्स. तो ये कैसे पता चलेगा? क्लोजिंग ऑफ एक्सपेंशन स्पेसेस एट रेल जॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ क्रीप. तो वी नो दो रेल्स के बीच में अ गैप इज़ प्रोवाइडेड. क्यों? क्योंकि थर्मल स्ट्रेसेस की वजह से रेल एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो उसके लिए एन एक्सपेंशन गैप इज़ प्रोवाइडेड बिटवीन द रेल जॉइंट्स. तो दैट रेल जॉइंट विल आइदर क्लोज या फिर इट विल ओपन अप, क्योंकि रेल लॉन्गिट्यूडनली मूव कर गई है आगे या फिर बैकवर्ड्स. तो दैट इज़ एन इंडिकेशन ऑफ द क्रीप दैट द एक्सपेंशन गैप इज़ आइदर क्लोज्ड और ओपनड अप. Next, marks on rails made by spike head by scrapping or scratching of the rail slide. So जो फास्टनिंग्स एंड फिटिंग्स हमने जो यूज़ कर रखी हैं रेल को स्लीपर्स से अटैच रखने के लिए, क्योंकि रेल मूव हो गया है आगे या फिर बैकवर्ड्स, तो क्या होगा, जो जॉइंट्स पे हमने जो चीज़ें लगाई हैं फास्टनिंग्स एंड थिंग्स, दैट will make scratches on the rail, because since the rail has moved forward or backward, so those connections, those spike heads might make some scratch marks. तो उससे हमको पता चल जाएगा that creep has occurred. So these are the indication of creep. कि creep कैसे पता चलेगा? Either opening or closing of the expansion spaces, या फिर scratching marks on the rail where they are joined, where the joints are provided. So causes of creep. So various theories are propounded to explain the different causes of creep. These theories explain the probable causes of creep on rails, and none gives a true picture of the cause. So basically a number of theories are propounded, a number of theories are given to explain the causes of creep. कि creep किस वजह से हुआ होगा या हो सकता है, उसके लिए a number of theories are propounded. One is wave theory, another is percussion theory, drag theory, starting, accelerating, slowing down, stopping of train, expansion or contraction of rails due to temperature, unbalanced traffic, poor maintenance of track and components,
and some minor causes. So these are the causes, basically these are the causes behind creep. So first thing we'll see is wave theory. By moving load of wheel, a wave motion is set up um, because the wheel is moving on the rail. So a wave motion is set up on the rail. So you can see curve ABC. So basically this point is A, this point is B, and this point is C. This is A, this is B, and this is C. So this curve ABC is formed on the rail ahead of the wheel, resulting in rail deflection under the load, which results in creep. So because of the movement of the wheel, a wave motion is set up on the rail. तो इससे क्या होगा, डिफ्लेक्शन, इससे क्या होगा, a curve like ABC will be formed ahead of the wheel, and then this wheel will tend to push forward this curve. So इसकी वजह से क्या होगा, the rail will be pushed forward. So the wheel push the wave forward with the tendency to force the rail forward. So that's what I said कि इस wave motion की वजह से that has been set up due to the movement of the wheel, इसकी वजह से क्या होगा, a wave motion will be set up and movement of the wheel will tend to push this wave forward. ये क्या करेगी, ये wave motion को will try to push forward. On a particular rail, the joint action by several wheels causes creep. अब ऐसा एक wheel तो है नहीं, बहुत सारे wheels हैं, so they'll push the rail forwards ऐसे. as the wheel moves, the lift in front of the moving load is thus carried forward by the wheels and causes creep. तो ये जो वेव मोशन सेटअप हुआ है, क्यों, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द व्हील, इसकी वजह से जो ये फॉरवर्ड पार्ट है, इट इज़ जो ये लिफ्टेड पार्ट है, दैट इज़ टेंड टू मूव फॉरवर्ड, is pushed forward by the movement of the wheel, and thus creep occurs. That is the forward movement of the longitudinal forward movement of the rail occurs. So this is wave theory. Simple, because of the movement of the wheels, a wave-like motion is set up, a wave motion is set up, and as the wheel move forwards, it tends to push the lifted portion of the wheel forwards, and since there are a number of wheels, so they tend to push the lifted portion of the wheel forwards, and thus creep is formed. So this was first theory, first cause, wave theory. Second is the percussion theory. So according to this theory, creep is due to impact of wheels at the rail ends ahead joints. So according to this theory, creep, that is the longitudinal movement of the rail, occurs due to the impact of the wheel at the rail end ahead of joint. So we know there is this expansion gap is provided at the wheel ends. So इसकी वजह से the wheel has to take a jump. तो when it takes this jump, an impact is caused on the end of the forward the coming rail. इसकी वजह से the rail is pushed forward. According to this theory, percussion theory, when the wheel has to take a jump from one rail to another rail, it causes an impact on the coming rail, and that leads to the forward movement of the rail. When the wheel jumps to the facing rail end, it pushes the rail forward, resulting in creep. तो जब ये
It is jumping on this rail, it is causing an impact, and this is pushing the rail forward, resulting in creep. Creep due to this reason will increase due to following factors. Weak and loose fish bowls. अगर joint weak है then definitely uh, अगर joint weak है then definitely this rail will be pushed forward if the joint is weak. Damaged and old fish plates. Again अगर लूज फिश बोल्स हैं या फिश प्लेट अगर पुरानी है, डैमेज्ड है, तो इसकी वजह से द जॉइंट विल नॉट बी दैट मच ऑफ स्ट्रेंथ. तो उसकी वजह से क्या होगा, दिस फॉरवर्ड रेल विल बी पुश्ड फॉरवर्ड. Heavy axle load moving at a high speed. So this is definitely a reason, because a heavy load is being carried by uh, the locomotive, and that will push the rail forward. So according to the percussion theory, because this wheel has to take a jump from the previous rail to the coming rail, it causes an impact on the coming rail end, and that is how this rail is pushed forward. This ये बोलती है परकर्शन थ्योरी कि जब भी व्हील को जंप लेना है एक रेल से दूसरी रेल पे, तो जो रेल का एंड है जिस पे वो जंप करके आ रही है, जिस पे इम्पैक्ट आ रहा है, दैट रेल विल बी पुश्ड फॉरवर्ड. अगेन ऐसा एक तो व्हील है नहीं, नंबर ऑफ व्हील्स हैं, and all those wheels are taking jump and causing impact on the end of this rail and making it move forward and thus causing creep. and इसके रीज़न यही होंगे कि फिश बोल्ट अगर टाइटन नहीं है प्रॉपरली, फिश प्लेट अगर डैमेज्ड है, हेवी एक्सेल लोड मूव हो रहा है. So these are some of the reasons. First cause we saw was wave theory. Okay, a wave-like motion will be set up and this lifted part will be pushed forward, and that is how the rail will be pushed forward and the rail will move longitudinally इसकी वजह से. तो that is why creep will occur. Second is percussion theory, that says कि व्हील को जंप लेना पड़ रहा है जॉइंट्स पे, बिकॉज एक्सपेंशन जॉइंट्स आर प्रोवाइडेड, उसकी वजह तो वहाँ पे दे हैव टू टेक अ जंप. impact is caused on the coming rail, and that is why the rail is pushed forward. Second theory was percussion theory. Now third one is drag theory. Backward thrust on the driving wheels of the locomotive of train has got a tendency to push the rail off the track backwards. तो जो ड्राइविंग व्हील्स हैं, जो ड्राइविंग व्हील्स हैं, जो मेन व्हील्स हैं, they have a tendency to push the rails backward, to push the rail backwards, while the other wheels and the coaches push the rail in the direction of the travel. बाकी जो ड्राइविंग व्हील्स नहीं हैं, जो अदर व्हील्स हैं and the other coaches हैं, they try to push the rail towards the direction of their movement, मतलब in the forward direction. So the driving wheels have a tendency to push the rail backwards, and the other rails and coaches, they have a tendency to push the rail backwards, forwards in the direction of the travel. This result in creep in the direction of the movement of the train. तो इसकी वजह से creep will occur in the direction of the movement of the train. Next is starting, accelerating, slowing down or stopping of the train. तो इसकी वजह से भी creep होगा. When train starts or accelerates, backward thrust is generated by the driving wheels, which tends to push the rail backward. जब भी train start हो रही है या फिर accelerate हो रही है, then wheel have a tendency to push the rail backwards. तो one thing that similarly when it slows down, जब भी वो रुक रही है, when the brakes are applied, then by logic it has a tendency to push the rails forward. इसकी वजह से the creep will occur. So 4 things we studied: wave motion, wave theory, second percussion theory, third drag theory, and then starting, slowing down, accelerating, stopping of the train.
नेक्स्ट इज एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेल्स ड्यू टू टेम्परेचर. तो अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन है तो that will lead to the expansion and contraction of the rails. Um, so that may lead to the shifting of the location of the rails longitudinally, that is creep. So due to a range of temperature variations, the rails contract and expand a number of times, which may lead to shift in the location of rails longitudinally, that is creep. Clear? Next is unbalanced traffic. If heavy load equal traffic if heavy equal traffic runs in both directions, the creep is almost balanced. Otherwise, heavy traffic in one direction causes creep in the direction of the more traffic. अगर दोनों डायरेक्शन में ट्रैफिक इक्वली ट्रैवल हो रहा है इन बोथ द डायरेक्शन, हेवी ट्रैफिक इक्वली बैलेंस्ड है इन बोथ द डायरेक्शन, देन क्रीप इज़ ऑलमोस्ट बैलेंस्ड. अगर ट्रैफिक बैलेंस्ड है दोनों डायरेक्शन में, देन जितना फॉरवर्ड गया है रेल, इट माइट कम बैकवर्ड उतना ही. इफ द इक्वल इफ देयर इज इक्वल ट्रैफिक इन बोथ डायरेक्शंस. अदरवाइज जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक है जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में क्रीप विल अकर. सो हेवी ट्रैफिक इन वन डायरेक्शन causes creep in the direction of more traffic. So this was the third cause of the creep. Seventh is poor maintenance of track and components. अगर poor maintenance है, joints properly tighten नहीं है, maintain नहीं है, और अगर if the rails are not properly fitted on the sleepers, if sleepers are not properly fixed, तो उसकी वजह से creep will occur. Rail will move forward or backward and creep will occur. Now some of the minor causes. Minor causes क्या हो सकते हैं? Rails are not tightly fixed, bad quality of sleepers, bad drainage, no proper consolidation of bed of track, gauge maintained tight, improper super elevation at curves, over capacity of traffic on rails, bad joints due to poor maintenance. So these are some of the minor reasons. So first we saw wave theory. Wave-like motion will be set up and the lifted area will be pushed forward and creep will occur. Next percussion theory. जब भी joints है वहाँ पे wheels will have to take a jump. That will lead to an impact on the forward rail, and that will eventually lead to the forward pushing of the coming rail. Next is drag theory. जो भी driving wheels हैं, they have a tendency to push the rails backward, and the जो भी बाकी के जो wheels हैं and the coaches है, they have a tendency to push the rail forwards. So that will lead to creep. Next, starting, accelerating, slowing down, stopping. इसकी वजह से thrust will be generated on the rails. जब भी ट्रेन स्टार्ट हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है, then there will be backward thrust will be generated, and that will push the rails backward. And whenever the train is trying to stop or de-accelerate, तब forward thrust will be generated, and that will push the rails forward. That will cause creep. Contraction, expansion of rails due to temperature. Temperature की वजह से rails expand, contract होंगी, और they might shift from their position and creep will occur. Unbalanced traffic है. अगर किसी एक direction में ज़्यादा traffic है तो उस direction में creep will occur. The rails will move in that direction. Poor maintenance of track and components. And some minor causes कि joints properly fixed नहीं है, rails fixed नहीं है, quality of sleeper proper नहीं है, proper consolidation of bed नहीं है track का, it's not properly consolidated, and over capacity of traffic, bad joints. These are some of the minor causes of the creep. Effects of creep.
स्लीपर्स मूव आउट ऑफ पोजीशन। तो डेफिनेटली क्रीप है, क्रीप हो रहा है। क्रीप मतलब सिंपल रेल्स जो है वो फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड मूव कर रही है अपनी पोजीशन से रेल्स, दैट इज़ क्रीप। तो उसकी वजह से क्या क्या होगा इफेक्ट्स? स्लीपर्स मूव आउट ऑफ पोजीशन, जो गेज है इट माइट गेट डिस्टर्ब्ड। Gauge, is the difference is the distance between the inner faces of the rails, that will get disturbed. Gap variation at joints and other parts result in uneven stresses. जो गैप है, जब रेल्स मूव कर गई है फॉरवर्ड या बैकवर्ड, तो कहीं पे तो जो एक्सपेंशन गैप है वो बढ़ जाएगा, कहीं पर द एक्सपेंशन गैप विल क्लोज। battered rail ends due to expansion of gap at joints. तो अगर क्लियरली अगर गैप बढ़ गया है देन द व्हील हैज़ टू टेक अ बिगर जंप, तो उसकी वजह से इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा आगे वाली रेल पे, so that will damage the rail end. This is another effect of the creep. At other places the joints may get jammed and prevent expansion due to temperature variation. तो अगर कहीं पे अगर रेल मूव कर गई है देन इफ़ इट्स मूव्ड फॉरवर्ड, तो जो पीछे एक्सपेंशन गैप है इट विल गेट एक्सपैंडेड एंड दी गैप एट दी अदर एंड ऑफ द रेल विल गेट जैम्ड, वहाँ पे गैप नहीं बचेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर जब भी वैरी होगा तो जो रेल्स हैं दे विल बी अनेबल टू एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज़ अनदर इफेक्ट। पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स विल बी डिस्टर्ब्ड। जो पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स है वो दैट विल गेट डिस्टर्ब सिंस रेल्स अपनी पोजीशन से मूव कर गए हैं। डिफ़िकल्टी टू रीफिट रेल विद क्रीप। अगर अगर रेल्स को हमें रीफिट करना है, अगर हमने उसको इफ़ यू हैव टेकन इट आउट फॉर मेंटेनेंस और एनीथिंग एल्स एंड देन वी हैव टू रीफिट इट, देन इट विल बी डिफ़िकल्ट। इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म ऑल्सो गेट डिस्टर्ब्ड। सो जो टर्न्स पे, कर्व्स पे, क्रॉसिंग पे इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म है वो भी इट विल ऑल्सो गेट डिस्टर्ब्ड। क्रीप में डैमेज फिश प्लेट्स एंड फिश बोल्ट्स। क्लियरली अगर कोई चीज़ फिक्स्ड है कहीं पे, दैट इज़ रेल्स फिक्स्ड है वहाँ पे एंड दे हैव मूव्ड अपनी पोजीशन से बिकॉज ऑफ एक्सेसिव लोड, बिकॉज ऑफ ब्रेकिंग एंड एक्सेलरेटिंग ऑफ द ट्रेन, बिकॉज गैप्स हैं तो इम्पैक्ट आ रहा है रेल के एंड पे, दैट आर कॉजिंग इट टू मूव फॉरवर्ड। तो इसकी वजह से द जॉइंट्स पे जो फिश प्लेट्स एंड फिश बोल्ट्स हैं दे माइट गेट डैमेज। तो ये है इफेक्ट ऑफ क्रीप कि अगर रेल अपनी पोजीशन से फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव कर गई है देन इसका क्या क्या इफ़ेक्ट आ सकता है। तो इसका स्लीपर्स पे इफ़ेक्ट आएगा, गेज पे इफ़ेक्ट आ रहा है, इसके जॉइंट्स पे इफ़ेक्ट आ रहा है, इसका खुद पे इफ़ेक्ट आ रहा है दैट दे विल नॉट बी एबल टू एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट अगर गैप क्लोज हो गए हैं तो रेल के मूवमेंट की वजह से। एंड पॉइंट्स इन क्रॉसिंग पे इफ़ेक्ट आएगा, डिफ़िकल्टी इन refit of the rail, interlocking mechanism will get affected, fish plates and fish bowls might get damaged. So these are the effects of the creep. Prevention of the creep. Since creep is unavoidable because following जो हमने reasons देखे हैं creep के, we cannot avoid them. We cannot avoid the breaking of the rails, or we cannot avoid the acceleration, we cannot avoid the stopping, we cannot avoid the jumping of the wheels from one rail to another. So creep is unavoidable, so all we can do is prevent them. So first thing, pulling back of rails method. तो एक मेथड जो है क्रीप को प्रिवेंट करने का वो है पुलिंग बैक ऑफ द रेल्स मेथड। तो क्रीप मीन्स रेल मूव कर गए फॉरवर्ड फॉर एग्जांपल, सो दे आर पुल्ड बैक, दे कैन बी पुल्ड बैक आइदर मैनुअली और mechanically. So rails are pulled back equal to the amount of creep manually or using jacks. Sleeper fittings are made loose. Fish bowls are removed at one end, while at the other end they are made loose. So this is the mechanism लिखा हुआ है कि कैसे they are pulled back.
कि जो स्लीपर फिटिंग्स हैं दे आर मेड लूज, एंड देन दी फिश बोल्स हैं दे आर रिमूव्ड एक एंड पे, एंड दूसरे एंड पे दे आर मेड लूज. At the other end, a linear at the other end a linear is placed, and the rail is pushed or pulled as required. So दूसरे end से जहाँ से हमने हटाए फिश बोल्ट्स, वहाँ से द रेल इज पुल्ड बैक और पुश फॉरवर्ड. अगर रेल longitudinally forward move कर गई है, then obviously we'll have to pull it back, or vice versa. Following points should be noted. Track should be packed properly after pushing or pulling. जब भी हमने क्रीप को एलिमिनेट किया, हमने इसको क्रीप को हटाने के बाद, द ट्रैक शुड बी पैक्ड प्रॉपर्ली. फैसिलिटीज शुड बी देयर टू अवॉइड रेस्ट्रिक्शंस. हाँ, सो ये सब फैसिलिटीज़ होनी चाहिए कि जो ट्रैफिक है उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाए, एंड अदर थिंग्स. सो दीज आर not very necessary. You should know कि what is the first method of prevention of creep is we can pull them or push them according to the creep, either manually या फिर by using jacks. So this was the first method. Second, usage of creep anchors. So creep anchors are another tool जिसे हम use करके creep को हटा सकते हैं. We can prevent creep by using creep anchors. So pulling back method is tedious and costly. 75% decreased using creep anchors. So 75% of times आपको क्या देखने को मिलेगा कि creep anchor use करके we are preventing the creep. Creep anchor is a cast iron piece which is made to grip the rail. So creep anchor is a cast iron piece जो कि ग्रिप करके रखता है रेल को in its position, जिससे वो मूव ना कर पाए. The arrangement of anchors prevent the movement of rails, thereby creep. That's what we just said कि जो anchor है that will keep the rail on its desired position and will not allow it to move it either way. So that is how it prevents creep. Because the sleepers which are embedded in the ballast should move for movement to take place. Creep anchors should be strong enough to resist the stresses. Number of anchors are determined by the intensity of the creep. Creep anchors should be placed at points where the creep originates, should be avoided on railway bridges. So these are some of the minor points about the creep anchors. So you should know कि creep anchors हम यूज़ करते हैं टू प्रिवेंट द क्रीप. ये एंकर्स हैं, दे होल्ड द रेल, अपनी पोजीशन पे होल्ड करके रखते हैं रेल को. दे डू नॉट अलाउ रेल टू मूव ईदर वे, एंड दैट इज़ हाउ द क्रीप इज़ प्रिवेंटेड. सो फर्स्ट वाज द पुलिंग बैक मेथड, सेकेंड इज बाय यूजिंग क्रीप एंकर्स, other method is by using steel sleepers, The use of steel sleepers on track minimizes creep. Sleepers are provided with fittings which do not easily allow the creep to occur. They will also have a good grip with ballast to resist their movement in ballast. Increase in number of sleepers will also help in prevention of creep. So steel sleepers, they will not allow the rails to move, and they have a good grip ballast पे. That also prevents the movement, and increase in number of sleepers will also help in prevention of creep. जितने ज़्यादा हम increase करेंगे numbers, that will also help in the prevention of creep. This was yeah, that's all. So we studied simple things कि creep क्या होता है, movement of the rail या तो फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड लॉन्गिट्यूडनली, उसको हम क्रीप कहते हैं. इट्स वेरी कॉमन, इट इज़ बाउंड टू हैपन. इंडिकेशन ऑफ द क्रीप, हमें कैसे पता चलेगा कि क्रीप हैज़ अकर्ड. जो गैप्स हैं वो क्लोज हो गए हैं या फिर वो ओपन हो गए हैं, या फिर जो भी जॉइंट्स है वहाँ पे स्क्रैचिंग मार्क्स है, जो भी हमने जॉइंट पे जो भी फास्टनिंग्स लगाई हैं उसकी वजह से. सो दे विल इंडिकेट द क्रीप. Causes of the creep, there are a number of causes.
एक तो वेव थियोरी है जिसमें which tells us that a wave like motion is created due to the movement of the wheel which is carrying a heavy load, and इसकी वजह से a lift is produced, and these number of wheels tend to push this lift forward, and that causes creep. Wave theory. Second is percussion theory कि gaps are provided rails के बीच में, and ये gap पे wheel has to take a jump, and because of that the ends the ends undergo an impact, and they are pushed forward. अगर ये joint weak है, loose है, तो ज़्यादा हो सकता है creep. This is percussion theory. Drag theory. Forward जो driving wheels हैं, they have a tendency to push the wheel backwards, and the जो बाकी के जो wheels हैं and coaches हैं, they have a tendency to push it forward. Next is starting acceleration, slowing down, stopping of the train. इसकी वजह से भी creep होगा. Next is expansion or contraction of rails due to temperature. टेम्परेचर की वजह से एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होगा रेल्स का, एंड दे माइट गेट डिस्टॉर्टेड फ्रॉम देयर get disturbed from their right place. Unbalanced traffic. अगर किसी एक ही डायरेक्शन में ज़्यादा ट्रैफिक है, then the rails will move in that direction, and hence creep will occur. Poor maintenance at track and components की, and some of the minor causes we saw. Effects of this creep. सब ऑलमोस्ट सारे कंपोनेंट्स पे इफेक्ट आएगा, जॉइंट्स पे इफेक्ट आएगा, स्लीपर्स पे इफेक्ट आएगा, गेज माइट गेट डिस्टर्ब्ड, रेल के एंड्स माइट गेट डैमेज्ड, एंड एक्सेट्रा. प्रिवेंशन देखा कि हम बाय पुलिंग बैक हम रेल्स को वी कैन पुल इट बैक. हम क्रीप एंकर्स यूज़ करके वी कैन प्रिवेंट क्रीप, एंड वी कैन यूज़ स्टील स्लीपर्स. So that was the creep of the rails. Thank you.